وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we begin a new surah today, Surah Naml. Naml means ant. Naml in Arabic means ant. This surah is a Meccan surah, constitutes 93 verses. And by and large, this surah speaks again about Allah's revelations, His powers, His manifestations, and how truth always prevails. And right in the beginning, the narrative of Musa alayhi salam is once again mentioned, followed by a very interesting episode of Sulaiman alayhi salam and his invitation to the Queen of Saba to embrace Islam, and what are the events that unfold in her finally accepting Islam, and much, much more coming up in this particular surah. Looking forward to seeing all of you to concentrate on these particular verses and keep yourself consistent in the Quran class so that you don't miss the link between the verses and those particular lessons that we will be doing, inshallah, on a day-to-day basis. Praying to Allah to make the surah easy for us in our recitation, translation, understanding, and implementation. Ameen Ya Rabbal Alameen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Tasin. These are the verses of the Quran and the book clear. A guidance and glad tidings to the believers. Those who establish Salah and give Zakah, and they in the hereafter they believe with certainty. And they in the hereafter they believe with certainty. Verily, those who do not believe in the hereafter, zayyanna lahum amalahum. We have made fair seeming for them their deeds, so they yamahun wander blindly. Those are the ones for them Sul Azab is evil torment, and for them, and they in the hereafter humul aksarun, they shall be the worst losers. I repeat, those are the ones for them evil is the torment, and they in the hereafter humul aksarun, they shall be the worst losers. Wa innaka latulaqqal Quran, and verily you surely have received the Quran from the one who is the most wise, the all-knower, yani Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान खूब रहम फरमाने वाला. तौसीन, ये कुरान और वाज़ेह किताब की आयतें हैं, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात और वो आखिरत पर वो यकीन रखते हैं. बेशक जो लोग नहीं ईमान रखते आखिरत पर, हमने खुशनुमा बना दिया उनके लिए उनके अमाल, फिर वो अंधे भटकते हैं. यही वो लोग हैं उनके लिए बुरा अजाब, और वो आखिरत में वो सबसे ज्यादा या सख्त तरीन नुकसान वाले होंगे. और बेशक आप, यानी अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमा रहा है, और बेशक आप जरूर हासिल किए हैं ये कुरान उस जात की तरफ से जो बड़ा हिकमत वाला है और खूब जानने वाला है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला. So in the opening verses, Allah subhanahu wa ta'ala says that this revelation which has been sent to you, O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, is the Quran whose verses have been made categorically clear before you. And this Quran is a guidance and it is a bearer of glad tidings to the believers. ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ है, और ये वाज़े आयतें अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया हुआ है, और ये हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए. और कौन है ईमान वाले? वही लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं. Who are those believers? Not by name, not by the community they belong to,
But on the contrary, Allah defines the believers by saying those who establish salah, those who give zakah, and those who believe with certainty in the hereafter. But those people who do not believe in the hereafter, Allah says, they think that they're doing excellent deeds, but it's going to be of no use. अल्लाह ने खुशनुमा बना दिया उनके अमाल को, समझते हैं कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नेकियां कमा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं. They have become directionless. There's no purpose. There's no noble purpose or an objective for which they're doing good deeds. They're doing good deeds maybe to gain fame, name, false dignity and honor in this world. शायद ये लोग अच्छे अमाल कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, नाम और नमूद के लिए. इनके लिए आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं, और इनके लिए भी कोई नस्बुलैन नहीं है उनके सामने जिसको बुनियाद बनाकर ये कोई नेकी का काम करे. ये सिर्फ दुनिया के हद तक जो है उनको फायदा मिल जाए, यही उनका मकसद होता है. But for the believers, they don't care about this world. They don't simply care about this world. As long as Allah subhanahu wa ta'ala has taken note and Allah subhanahu wa ta'ala has placed on record our good deeds, that's enough for us. We don't care about the rest. And we don't need to gain appreciation, recognition, praise, or any kind of glorification of our name. Not at all. A believer never has that in mind, and that is something which is very, very threatening and dangerous. That अगर हमने इस किस्म के ख्याल को नर्चर करे हमारे जहनों में कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें एक बड़ा शख्स समझे वगैरह वगैरह, चले गए पूरे नेकियां अकारत हो गए. खालिस अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए, काफी है हमारे लिए. अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ने हमारे अमाल को नोट कर लिया, काफी है हमारे लिए. हम दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते. हम नेकियां कर रहे हैं सिर्फ आखिरत में उसको अजर पाने के लिए. So a lot of difference in a person doing good deeds, keeping akhirat in mind, and doing good deeds without keeping akhirat in mind. Without keeping akhirat in mind, waste. बेकार चले गए, अकारत हो गए. हबीतत आमालुहुम, रागा हो गए उनके पूरे अमाल, खलास. लेकिन जो लोग आखिरत को अपने दिल और दिमाग में रखकर, अपने जहन में बिठाकर कि आखिरत में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने वाला हूं और जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को उसका अजर देगा, खालिस इस नियत के साथ जो नेकी करेंगे वो जरूर अपना अजर पाएंगे. And Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, O Prophet, you have received the Quran from the Rabbul Alameen, min ladun hakimin alim, from the one who is most wise, the most knowledgeable. He has granted this knowledge of the Quran which is full and full of wisdom. ये ऐसा कुरान अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया, अल्लाह के रसूल जो बड़ा हिकमत वाला है, खूब जानने वाला है, रब्बुल आलमीन. इस क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा साअतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन खबसिल लअल्लकुम तस्तलून. When said Musa alayhi salam to his family, Inni anastu nara, verily I have perceived a fire. Soon I shall bring to you from it bikhabarin, some information. Or I shall bring to you bishihabin, a burning brand. La'allakum tastalun, so that you may warm yourselves. जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से, बेशक मैंने देखा है आग, अनकरीब मैं ले आता हूं तुम्हें वहां से कोई खबर, या मैं ले आता हूं तुम्हें एक रोशन अंगारा ताकि तुम अपने आप को ताप सको. You know that Musa alayhi salam, after serving for 8 or 10 years in Madian, is now returning to Egypt. And Musa alayhi salam is returning with his family. En route he encounters something very strange. वो अपने सफर में जो मिस्र की तरफ अपने घर वालों के साथ वो लौट रहे हैं, 8 साल या 10 साल मदियन में रहकर, अब एक अजीब व गरीब वाकया पेश आता है मूसा अलैहि सलाम को. At a distance he sees, in that cold wintry night with eerie silence all around, some fire. So Musa alayhi salam is little excited, and he tells his family, it's going to be of great benefit. I'll get some information, I'll be able to know exactly the route we are taking. And at the same time,
being a cold wintry night, ठंड है, रात का वक्त, सन्नाटा छाया हुआ, रास्ता भी सही नजर नहीं आ रहा, तो इस आग से शायद मैं कोई रास्ता मेरा तय कर सकूं, सही तरीके से सही रुख की तरफ मैं जा सकूं, या मैं यहाँ से जो है कोई अंगारा लेके आऊं, so that we could warm ourselves because of the cold wintry night. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Then when he came to it, Nudia, he was called Amburika Finnar, that blessed be the one who is in the fire and whoever is around it. And glory be to Allah, the Lord of the worlds. O Musa, innahu anallah, verily I am Allah, the Almighty, the All-Wise. And throw your staff, walqi asak, and throw your staff. Then when he saw it, tahtazu, in motion, as if it were a serpent, he turned his back, or he turned in flight and not looked back. O Musa, do not fear. Verily not fear near me the messengers, except the one who wronged, then replaced with good after the evil, then verily I am most forgiving, most merciful. फिर जब वो आया, निदाई के बाबरकत हो वो जो आग में है और जो इसके इर्द गिर्द, और पाक है अल्लाह तमाम आलम का रब. ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूं, खूब गालिब, खूब हिकमत वाला. फेंक तेरा आसा. फिर जब उसने देखा वो हिल रहा है गोया के एक सांप की तरह, उसने फिर गया पीठ दिखाकर और नहीं मुड़कर देखा. अल्लाह ने फरमाया, ला तखफ, ए मूसा ना तू डर, बेशक नहीं डरा करते मेरे यहाँ रसूल, बेशक नहीं डरा करते मेरे यहाँ रसूल, सिवाय जिसने गुनाह किया हो, यानी जुल्म किया नहीं, गुनाह किया फिर बदल दिया नेकी के जरिए, नेकी के साथ उस बुराई के बाद, तो बेशक फिर मैं जरूर खूब बख्शने वाला, खूब रहम फरमाने वाला हूँ. According to the tafsir, that's actually not the fire. This is the light of Allah, the nur of Allah. Otherwise, the fire would have eaten up the tree itself, because from the tree only came the fire. तो अल्लाह की तजल्ली थी, उसके अनवारात थे, उसका नूर था. ये कोई आग नहीं थी, लेकिन लग रहा था आग की तरह. अगर आग होता तो फिर वो दरख्त जल जाता. तो ये आग नहीं था, अल्लाह का नूर था, अल्लाह की तजल्ली थी, वो अनवारात थे उस पूरे माहौल को जो रोशन किए हुए थे. It was Allah subhanahu wa ta'ala's light. That brightness which appeared like fire was actually not fire. Had it been fire, the tree from which the fire was emanating, the tree would have been burnt. It was not the fire. It was the light of Allah which looked like fire from a distance to Musa alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala made the entire environment bright. And in that situation, Allah subhanahu wa ta'ala calls out to Musa alayhi salam and says, "Oh Musa, Inni anal Azizul Hakim. I am Anallahu Azizul Hakim. I am Allah, the Almighty, the All-Wise." Allah starts his dialogue with Musa alayhi salam. Further, وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. And put your hand in your bosom. It will come out white without any harm. Among the 9 signs towards Pharaoh and his people, verily they were a people fasiqin, defiantly disobedient.
और डाल तेरा हाथ तेरे गरेबान में, वो निकल आएगा सफेद यानी चमकता हुआ बगैर किसी ऐब के। ये 9 निशानियों में से हैं जो भेजे गए फिरौन और उसकी कौम की तरफ। बेशक वो था बेशक वो थे लोग नाफरमान या फासिक। Initially, 2 miracles of signs were shown to Musa alayhi salam, and they were asked, that is Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, were asked to go to Pharaoh and show these signs or miracles before them. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتِنَا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Then when came to them our signs mubsiratan, as clear insights or as clear evidences, they said, Haza sihrun mubin, this is magic clear. Wajahadu biha, and they denied in it. First, I'm going to translate zulmu wa uluwa and then come to wastayqanatha anfusahum. Follow the translation very carefully. Those of you who wish to participate, take note. And they denied with it through injustice and arrogance. Wastayqanatha anfusahum, though had been convinced of it their hearts. So see how was the end of the mischief maker. I repeat this translation for you to understand it better. And they denied in it through injustice and arrogance, though had been convinced of it their hearts. So see how was the end of the mufsidin, mischief makers. फिर जब आए उनके पास हमारी निशानियां खुल्लम खुल्ला, उन्होंने कहा यह तो सरी जादू है, और उन्होंने इनकार किया उसका जुल्म और घमंड के जरिए, हालांकि यकीन पाया उन्होंने अपने दिलों में। फिर देखो कैसे हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। They were totally convinced, यकीन ला चुके उनके दिल, लेकिन घमंड, किबर, अना, जुल्म। जुल्म किस पर? अपनी जात पर। यही होता है अक्सर, आदमी हक को मानने को तैयार नहीं होता, हालांकि हक वाज़े तौर पर उसके सामने पेश कर दी गई और वो उसके दिल में भी उसको एहसास हुआ कि जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि अना बीच में आ जाता है। किबर, घमंड, अपने आप को बड़ा समझना। अब मैं क्यों इसकी बात मानूं तो फिर मैं उसके सामने छोटा हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। Why should I accept, even though their hearts were convinced that what was displayed before them was absolutely truth, but what stopped them from accepting? Oh, then if I were to accept, then I would become inferior to him. He would rule over me. He will gain authority. I would lose my status. So ego, pride, arrogance, status, all these issues come in the way to prevent a person from accepting the truth. That's the biggest danger. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. A new episode starts from here, a new narrative, and that is about Sulaiman alayhi salam. Very interesting episode, and the name of the surah itself is called Naml, based on this ant. And first Allah starts off with that, and subsequently goes on as to how Sulaiman alayhi salam is extending his invitation to the Queen of Sheba to accept Islam. Very interesting episode. Follow it very carefully.
And certainly we gave Dawood alayhi salam and Sulaiman alayhi salam knowledge. And they both said, all praise be to Allah, the one who preferred us upon many of his believing slaves. And Sulaiman alayhi salam inherited Dawood alayhi salam. And Sulaiman alayhi salam said, Ya ayyuhan nas, O people, ullimna mantiqat tayr, we have been taught the knowledge, we have been taught the language of the birds. And we have been given of everything. Inna haza lahu al-fazlul mubin, verily, verily this is surely a grace clear or a bounty clear. और यकीनन हमने दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, और दोनों ने कहा तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, वो ज़ात जिसने फजीलत बख्शी हमें अक्सर मोमिन बंदों पर, अक्सर उसके मोमिन बंदों पर, फजीलत बख्शी हमें अक्सर उसके मोमिन बंदों पर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बने दाऊद अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगों, हमें सिखाई गई है बोली परिंदों की, और हमको दिया गया हर चीज में से, बेशक ये खुला अल्लाह का फजल है, बेशक ये खुला उसका फजल है, खुला उसका फजल है। Sulaiman Islam's father was Dawood Islam, yet another illustrious prophet. And Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed to Sulaiman Islam some special privileges, particularly the kind of kingdom which Allah had bestowed and conferred on Sulaiman Islam, a kind of which was never given to any human being before him and would never be given to anyone till the day of Qiyamah. Allah ने ऐसी सल्तनत, ऐसी बादशाहत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी, जो खुद जो है एक नबी के बेटे थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और अल्लाह ने उनको गैर मामूली सलाहियतें, गैर मामूली अख्तियारात अल्लाह ने उनको नवाजा था. But there was no element of arrogance or pride anywhere. That's the underlying feature. That's the point to be underlined. लेकिन कहीं भी आप देखेंगे इतने सारे इख्तियारात, इतने सारे नवाजिशें, इतने सारे नियामतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देने के बावजूद हम देखते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी की हैसियत से उनकी आजिज़ी, उनकी परहेजगारी, उनका ईमान और दीन की खिदमत करने का जज्बा, that's the most important thing. Today what little we become busy, we don't have time to contribute for the cause of Islam. We're so busy that we don't have time to attend the Quran class itself. May Allah pardon and forgive us. और ऐसी सल्तनत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी, but he made sure that he establishes justice wherever he went, and he could take care of all his, and he was always taking care of his subjects, including the birds, including the insects, including the animals. What power Allah would have conferred on him, just imagine. कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अजीम शान गैर मामूली सी सलाहियतें दिए होंगे, वही 24 घंटे और इतनी बड़ी सल्तनत, और अल्लाह ने उनको चुमटियों की, परिंदों की, जानवरों की, जिन्नात के तमाम बोलियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको सिखाया. He could engage with them, have a dialogue with them, speak to them, understand their language. That was the power which Allah subhanahu wa ta'ala had given to Sulaiman. What does Sulaiman say? Inna hadha lahu al-fazlul mubin. This is only Allah's grace upon me. It's not I, but it's Allah subhanahu wa ta'ala's gift conferred on me. ये very very important है. आज जो कुछ हमारे पास है, we also own wealth, families, status, intellect, qualifications, health, and what not. We did not bring anything from the womb of our mothers. Everything has been given from Allah subhanahu wa ta'ala to us to test us as to how are we utilizing these favors which Allah has conferred on us. And on the basis of these blessings and favors, we will be questioned on the day of Qiyamah. Thumma latus'alunna yawma izin anil na'im. तुम्हारी एक एक नियामत के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा. वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून. And
was gathered before Sulaiman, his hosts among the jinnat and mankind, and the birds for whom you own, then they were made to stand in rows. Until when they came upon the valley of ants, said the she ant, Ya ayyuhan Naml, O ants, udkhulu masakinakum, enter your dwellings. La yahtimannakum, let not crush you Sulaiman and his hosts, wahum la yashurun, while they not perceive. और इकट्ठा किए गए या हाजिर कर दिए गए सुलेमान के लिए उसका लश्कर जिन्नात और इंसानों में से और परिंदे, फिर उनको सब सफ बस्ता खड़ा दिया गया, यहाँ तक कि वो जब आए चुमटियों की वादी पर, एक चुमटी ने कहा, ए चुमटियों, दाखिल हो जाओ तुम्हारे बिल्लों में, ना कुचल दे तुम्हें या रौंद डाले तुम्हें सुलेमान और उसका लश्कर, जबकि उनको शऊर भी ना हो। فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Then he smiled, laughing at her statement. And Sulaiman alayhi salam said, My Lord, Awzini, enable me or give me the ability, and ashkura ni'mataka, that I be grateful to your favors which you conferred upon me, wa ala walidayya, and upon my parents, and that I may do salihan, righteous deeds, which you may be pleased with it, tarzahu, which you may be pleased with it, and admit me in your mercy, fi ibadika salihin, among your slaves righteous. फिर मुस्कुराकर हंस पड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बात पर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, तौफीक दे मुझे कि मैं शुक्र बजा लाऊं तेरे नियामत का जो तूने इनाम किया मुझ पर और मेरे वालिदैन पर, और कि मैं करूं नेक अमल जिससे तू राजी हो जाए, और दाखिल कर मुझे तेरी रहमत के जरिए सालिहीन बंदों में, तेरे सालिहीन बंदों में. That's right. What a beautiful dua. No element of pride, no element of arrogance, no feeling that he has been elated. No. कितनी आजिज़ी. चूमटी, such a small insect which at a distance may not be even visible to the naked eye. दूर से वो चुमटी नजर भी ना आए आंख को, और सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ उसको देखते नहीं बल्कि उसकी बोली को भी समझ लेते हैं. इससे बात भी साबित होती है कि चुमटियां जो है कम्युनिकेट करते हैं. आज साइंस ने इस बात को हमारे सामने पेश की. व्हाट Allah subhanahu wa ta'ala has informed us 1400 and odd years back that ants communicate to each other. And this statement of the ant, Sulaiman Islam, on hearing, is thanking Allah profusely. So many favors Allah subhanahu wa ta'ala has conferred us. कितने नियामतों से अल्लाह ने हमको नवाजा है. एक रात की चैन की, रात की नींद ही कितनी बड़ी नियामत है. सोच कर देखिएगा. थोड़ा एक हॉस्पिटल का विजिट कीजिए या कोई बीमारियों की इयादत के लिए जाइए. We would be trembling out of fear. दिमाग काम नहीं करेगा कुछ वक्त के लिए. कई रातें जो है नींद के बगैर ये बीमार परेशान है, तकलीफ उठा रहा है. अल्लाह ने हमें राहत की रात की नींद देता है. कितनी बड़ी नियामत अल्लाह की. डीप स्लीप विदाउट पिल्स, विदाउट मेडिसिन. इंटेलेक्ट, सोचने समझने की सलाहियत. माल और दौलत, खाना और सब कुछ हमारी ग़िज़ा की वो अल्लाह ने मुहैया किया है. He has provided us so many varieties of food. He has provided us shelter. We go about distributing food to the poor on a weekend. We see how the poor are lying on the platforms. Their shelter is the sky.
physically challenged, unable to move. Allah ने हमें कैसे राहत रखा है. Shouldn't we be grateful to Allah? And the best way to show our gratitude towards Allah is to contribute to the cause of Islam. Thank you बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के चले जाना एक हद तक ठीक है, okay, अपनी जगह, but that is not sufficient. This is what Sulaiman alayhi salam is saying. After thanking Allah profusely, he is also saying, "An amala salihan tarzahu." कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे अल्लाह तू राजी हो जाए. ऐसे नेक अमल करने की मुझे तौफीक दे. तौफीक comes from Allah. उसकी तौफीक ना हो तो आप और मैं कुरान लेके नहीं बैठते आज, या हम क्लासेस को अटेंड नहीं करते. अल्लाह की तौफीक ही के बुनियाद पर और अल्लाह की तौफीक ही की वजह से हम बैठे हैं. It's only on account of Allah's tawfiq that you and I are sitting with the Quran also today. Even if you give a 10 rupee note to a poor, it's again the tawfiq of Allah. For this also we need to thank Him that He's provided us an opportunity and created that inclination for us to do those good deeds. And the more we be thankful to Allah, the more He'll keep us consistent. The more He'll shower His blessings upon us. La in shakartum lazidannakum. If you're going to be grateful, I'm going to give you more. That's a very important point which Allah subhanahu wa ta'ala shares to us. So Allah subhanahu wa ta'ala is quoting the dua of Sulaiman alayhi salam, not just as a quote, but for us to draw a lesson out of it. And again, Sulaiman alayhi salam is doing dua to Allah subhanahu wa ta'ala, wa adkhilni bi ibadika fi ibadika salihin, and admit me with your birahmatika, with your mercy among the righteous servants. और हमें सालेह लोगों में शुमार फरमा, दाखिल कर हमें उस जन्नत में जहां पे सालेह बंदे होंगे. What an excellent and comprehensive dua of Sulaiman alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that strength of iman. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to do such good deeds that Allah not only be pleased, our name is celebrated in the heavens, and Allah subhanahu wa ta'ala is happy with us, and Allah subhanahu wa ta'ala is decided to grant us Jannatul Firdaus. That is what we need to aspire. We don't need any appreciation, recognition, money, or beat anything from anyone in this world. If at all we need anything, Allah ki raza. Raza ilahi, falah akhirat. Khalas. Allah ki raza, Allah ki khushnudi hasil ho jaye. Allah subhanahu wa ta'ala should be pleased with us, and we should be successful in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to do so. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our dua. Ameen. Tomorrow onwards, a very interesting part of this episode continuing, where now the entire narrative of Sulaiman alayhi salam engaging with the Queen of Sheba coming up. Looking forward to seeing you tomorrow, inshallah, with this narrative. Kindly be consistent, do your homework, be regular. Jazakallahu khair. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.